Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. In this video series, I have started discussion relating to important judgments from different topics of different subjects. Right now, I have picked up Indian Penal Code and this is exclusively for the preparation of CBI APP Law examination. इस एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए जजमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, इसलिए हम 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. आज के इस वीडियो में मैंने टॉपिक पिक किया है इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम इंडियन पीनल कोड. Welcome you all to iExamB's Legal Bee. If you have any queries, you can write to us on hello@iexamb.com, reach out to us on 9205524028 or visit our website www.iexamb.com. And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel. The first case for our discussion from this area is Ajit Singh versus State of Punjab 2011. In this case, the Supreme Court has observed that in order to hold whether an offence would fall under section 302 or section 304 part 1 of the IPC. So ये केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही सेलिब्रेटेड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. ये सबसे क्रूशियल एरिया होता है जहाँ पर ऑफेंसेस को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोर्ट के लिए. कई बार एविडेंसेस के बेस पर एंड एवरीथिंग द कोर्ट हैज़ टू कंसिडर एंड सी whether it fits into 302 or whether it is reduced to 304 part 1 of IPC. So in this case, what the court has observed, courts have to be, means the Honorable Supreme Court has observed that the courts have to be extremely cautious in examining whether the same falls under section 300 of the code, which states whether a culpable homicide is murder or would it fall under its given exceptions which lay down when a culpable homicide is not murder. So like that we have to focus on section 300 basically. ये टेक्निक है. अगर 300 में वो फिट होता है केस, then definitely it will go under murder or else it will be reduced to culpable homicide not amounting to murder. Next case, Shakti Vahini versus Union of India 2018. In this case, the Supreme Court has observed that honor killing is not the singular type of offense. It is a grave one, but not the lone one. It is a part of honor crime. Honor crime is the genus and honor killing is the species, although a dangerous facet of it. Why I have taken this judgment? Because this is a different one and this is also telling you about honor killing as a crime. Honor killing एक species है, ये भी उन्होंने इस कोर्ट में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये ऑफेंस काफ़ी ग्रेव है. ऑनर किलिंग के लिए उन्होंने काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए हैं. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है डिटेल्ड प्रिवेंटिव गाइडलाइंस कि ऑनर किलिंग ये बहुत बड़ा ऑफेंस है और एक मेजर प्रॉब्लम है स्पेशली कुछ स्टेट्स में. तो उसके लिए डिटेल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स या रेमेडियल मेजर्स हम लोग क्या ले सकते हैं. सो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर केस में दिए हैं. जयप्रकाश वर्सेस स्टेट 1991 and this was reiterated in केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. कई बार ऐसा होता है लैंडमार्क जजमेंट्स को रीआइटरेट किया जाता है कंपैरेटिवली रीसेंट जजमेंट्स में. सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड that it does not matter that there was no intention to cause death or even to cause an injury of a kind that is sufficient to cause death in the ordinary course of nature. ये words key words हैं. Murder and culpable homicide again. Murder especially. Or that there is no knowledge that an act of that kind will be likely to cause death. Likely, knowledge, intention, injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. जिसको ये ingredients अच्छे से पता है उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी. If you are not understanding, then immediately you need to go back to section 300 and read it carefully. Go back to section 304. This is something which you have to do. Go back to section 299.
ये सारे बेसिक सेक्शंस अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको ये जजमेंट्स पता चलेंगे एंड अच्छे से समझ में आएंगे. ये जजमेंट्स पढ़ने का और एक बेनिफिट क्या है, दैट यू आर हैविंग अ गुड रिविजन ऑफ योर बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल. So in this case, it was observed, once the intention to cause a bodily injury is actually found to be proved, the rest of the inquiry is purely objective in nature. And the only question is whether, as a matter of purely objective inference, the injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसमें फॉलो करना होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर्टिकुलर केस में. तो ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है. अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही आपको ये केस अच्छे से समझ में आएगा. आई वो सजेस्ट कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक क्रक्स दिया है, आप इन केसेस के डिटेल्ड समरीज विद फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बालकृष्ण 1992. This case, it was held that merely because the death of the person occurred in police custody. Now, this is a different area that I have tried to pick in this case again in this video. Death has taken place in the police custody does not necessarily mean that it is an immediate inference we have to draw that murder has been committed. अगर हम murder की बात करें तो IPC यहाँ पर attract होता है. Evidence Act is of course going to do its own work. But when we talk about the ingredients of murder, we cannot immediately impute that intention to the police immediately. D.V. Shanmugam versus State of AP 1997. An accused person cannot be given the benefit of doubt only on the ground that injuries on his person were not explained, particularly when the injuries are of simple and superficial nature. यानी कि injuries अगर simple और superficial nature के हैं तो आप उसका बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को नहीं दे सकते अगर उस इंजरी को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है. इन द सेंस, इफ इट इज समथिंग ग्रेव देन यू विल certainly go in the favor of prosecution, but if it is a very light injury which is superficial in nature and you say that it is not well explained by the prosecution, then the benefit of doubt will go in the favor of the accused. ऐसा ज़रूरी नहीं है. So this is also a good judgment, a good ratio, but again this is something which is the view of the court, which keeps on changing from case to case also. I hope these judgments are very helpful for you to understand the basic concepts and how the court is having approach in different cases. ये समझने के लिए इन cases को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है and it helps you revise your important concepts as well. So this was all that I had to discuss from offenses against human body, 5 important judgments. Don't forget to subscribe to Legal Bee and stay updated with all the videos in this upcoming ongoing series. Thank you everybody.